The program is about to commence shortly with the arrival of the esteemed guests in the house. Dais will be graced by our distinguished chief guest, the Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju ji. Our guests of honor, Honorable Minister of State of Law and Justice, Professor S.P. Baghel, and Justice Manindra Mohan Srivastav ji, Acting Chief Justice of Rajasthan High Court. The occasion will also be graced by Justice Rituraj Awasthi, Honorable Chairperson, 22nd Law Commission of India, and Honorable Vice Chancellor of the University, Professor I.V. Trivedi ji. Also in attendance, we will have Honorable Mr. Justice Vijay Vishnoi, Honorable Dr. Justice Pushpendra Bhati ji, and Honorable Justice Vineet Mathur ji from Rajasthan High Court. We will also have K.T. Shankaran ji, Professor Anand Paliwal, Professor D.P. Verma, members 22nd Law Commission of India. We will also have Shri Rajdeepak Rastogi ji, Additional Solicitor General of India for the Rajasthan High Court, Shri M. Karunanidhi, who is the part-time member of 22nd Law Commission of India, and we already have Shri Suresh Shrimali ji, Co-Chairman Bar Council of India amongst us. A humble request to one and all present here that when the guests arrive, kindly rise at your places, and also during National Anthem and Kulgeet, do rise at your places. Please do not clap after the Kulgeet. Kindly take your seats only after the honorable guests grace their chairs. You are humbly requested to maintain the decorum and dignity of the house during the inaugural ceremony. Today's welcome address will be delivered by Justice Rituraj Awasthi, Honorable Chairperson, 22nd Law Commission of India, and Honorable Vice Chancellor of the University, Professor I.V. Trivedi ji. Inaugural address will be given by our guest of honors, Mr. Justice Manindra Mohan Srivastav ji, Acting Chief Justice of Rajasthan High Court, Professor S.P. Singh Baghel, Honorable Minister of State of Law, and our esteemed chief guest, Shri Kiran Rijiju, Honorable Minister of Law and Justice, Government of India. It is my distinct honor to introduce such eminent personalities before the audience. After the inaugural session, the first and second technical session will be organized today itself in the FMS Stadium, that is Faculty of Management Studies Auditorium, MLSU, and the third session and valedictory session will be tomorrow morning at the FMS Auditorium. We kindly solicit your cooperation. Please be seated and maintain silence. The guests will be with us in some time. Namaskar, and a good morning to all the dignitaries, guests, delegates, faculty, and students of the university, colleagues, and our media friends. I, Varsha Chandra, Joint Secretary and Law Officer, Law Commission of India, on behalf of Law Commission of India and Mohan Sukhadia University, extend a warm welcome to all the distinguished dignitaries, guests to the conference. This conference is an effort to an insight to sustainable development which meet the needs of the existing generation without compromising with equality of the environment for future generations. We cordially welcome you all to the inaugural session of the two-day conference on sustainable development in India, evolution and legal perspectives, organized by the Law Commission and Mohan Sukhadia University, Udaipur. There will be 3 thematic sessions focusing on evolution, environment, and social legal aspects in tune with sustainable development. The legal experts, with the chair's approval, may also suggest any other topics. I'm confident that this conference will prove to be a great platform for exchange of new ideas on impinging issues from evolution, environment, and social legal aspects, which would help to provide a roadmap towards changing the perspectives towards sustainable development in our country. Therefore, I, on behalf of Law Commission, Ministry of Law and Justice, and University of College of Law, Mohan Sukhadia University, would like to express my gratitude to all the dignitaries and experts who gladly accepted our invitation, took out time from their busy schedules to attend this conference. In our Indian culture, light and lamp
symbolizes Atma Jyoti, which is eternal knowledge bestowing, to invoke the blessings of the Almighty, to bestow us with knowledge, wisdom, prosperity, and unfailing hope of striving towards a great future. I request all the dignitaries on the dais to step forward and light the ceremonial lamp and mark an auspicious beginning to this conference. वंदन शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन सत्यं शिवं सुंदरं की प्रतिमा कल्याणी विद्यया विन्दते अमृतम् उपनिषदों की वाणी यह प्रताप की धर्म भूमि के माथे का चंदन मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन श्री अखिलेश जी श्रीनाथ जी चार भुजा वीरेश्वर सूफी संतों की धरती में माना एक ईश्वर वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन यहाँ साधना रत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत्र बने राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन युवा
मेरा प्रोफेसर श्री आनंद पालीवाल सदस्य भारतीय विधि आयोग से अनुरोध है कि वे अन्य पधारे हुए माननीय अतिथियों का स्वागत करें। माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय विश्नोई जी, राजस्थान उच्च न्यायालय। माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय। माननीय न्यायमूर्ति श्री विनीत कुमार माथुर, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय। माननीय न्यायमूर्ति श्री के.टी. शंकरन, सदस्य भारतीय विधि आयोग। प्रोफेसर डी.पी. शर्मा सर, भारतीय विधि आयोग। श्री राजदीपक रस्तोगी जी, राजस्थान उच्च न्यायालय में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। श्री एम करुणानिधि, आंशिक सदस्य, भारतीय विधि आयोग। श्री सुरेश श्रीमाली जी, सह अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रोफेसर जीवन कुमार सर। एवं प्रोफेसर M.K. रमेश। Now I take this opportunity to invite Honorable Vice Chancellor of the University, Professor I.V. Trivedi sir, to deliver the welcome address. Please, sir. Good morning, ladies and gentlemen. Today we have assembled here on this August morning of the inaugural session of the two-day conference on sustainable development in India, evolution and legal perspective, organized by Law Commission of India and Mohan Sukhadia University, Udaipur. This is a historical event as the Law Commission of India is organizing an event at this scale for the first time in Udaipur with Mohan Sukhadia University, Udaipur. We in general, I am honored to welcome our distinguished chief guest, Honorable Minister of Law and Justice, Shri Kiran Rijiju. We are overwhelmed, sir. We are also honored to welcome our guests of honor, Honorable Minister of State of Law and Justice, Professor S.P. Singh Baghel, Justice Mahendra Mohan Srivastav ji, Acting Chief Justice of Rajasthan High Court. This occasion is also graced by Justice Rituraj Avasthi, Honorable Chairman of 22nd Law Commission of India. I would also like to welcome of the dais Honorable Justice Vijay Vishnoi, Judge Rajasthan High Court, Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Ji Bhati, Judge Rajasthan High Court, Honorable Mr. Justice Vinit Kumar Mathur, Judge Rajasthan High Court, Honorable Justice Mr. K.T. Shankaran, Member Law Commission of India, Dr. Anand Paliwal, Member Law Commission of India, Professor D.P. Verma, Member Law Commission of India, Shri Rajdip Rastogi, Additional Solicitor General of India at Rajasthan High Court. In the court, we have Shri Karuna Dehi, Part-Time Member Law Commission of India, Shri Suresh Srimali, Co-Chairman Bar Council of India, Professor Jeevan Kumar, Professor M.K. Ramesh. Sir, this occasion is also graced by the various dignitaries on the dais and of the dais. I would also like to honor and welcome various senior delegates from the legal profession. We have here the dean, directors, and the head of the department of the university. We have the very vibrant advocates of this Udaipur city, our students, ladies and gentlemen. I also welcome the esteemed speakers of the thematic session. I welcome all the people, all the persons who are sitting in this auditorium. Mohan Sukhadia University was established in 1962
And after that, this university is catering the needs of higher education in southern Rajasthan with more than 2.5 lakh students. The university is located in Aravalli Hill area, largely dominated by tribal population. We have pride of our alumni association. Ex-Chief Minister Mohan Sukhadia, ex-Chief Minister C. Charan Mathur, present Governor of the Assam, Gulab Chandji Kataria, Speaker of the Rajasthan Assembly, C.P. Joshi, Madam Girjaji Vyas, Justice N.N. Mathur, Justice Govind Mathur, so many IAS, RAS, Vice Chancellors, scientists, and CEOs throughout the world. Sir, since the inception of this university, it has started becoming very pioneer university in the state. We have the excellence in teaching, research, and extension. The three pillars of higher education, teaching, learning, and extension, this university has established a landmark in the state of Rajasthan. We are also developing our socio-economic growth and looking to the needs of the tribal people. We have so many activities performed by the universities, and this sustainable development is also the main first area of this university. University College of Law, which was established in 1946, started with LLB course. Now it has started n number of courses and ultimately LLM, diploma programs, 5-year integrated course. We are committed to the cause of the society, and accordingly, we talk about sustainable development, the ancient practices, traditional knowledge of the tribals, and the age-old practices reveal depth of knowledge which has been in the place since times immemorial. Take, for example, water. Water scarcity is a major concern of the region. We are thriving hard for the conservation of the water. Sustainable practices of the past have addressed this problem without making a dent on environmental well-being. The lakes of Udaipur are interconnected in the manner that our upper lake flows to the next lower flows. And that is the reason that our water is not wasted upon, and they are using it very properly in the form of the bawdis, ponds of the region, and other water resources. The university is committed to contribute towards sustainability and initiative to protect the environmental through its various programs and activities. It promotes the sustainable practices to sensitive the students and community at large. One such practice is rainwater harvesting. Water harvesting structures have been installed in our university in such a way that water is not wasted. We have also seen the various things. If you see this campus, you will find that we have so many water harvesting activities even in the guest house. We have also placed vehicle-free zone. We have auto rickshaws, e-rickshaws also for the convenience of the students. All these are mainly for the youth of the teachers and students. Sir, I would like to say that our aim is to render so many activities, students' involvement, and every day we invite the students for their original ideas, original thinking, so that they can give a good shape to the university. There are so many things, so many speakers. I would like here that though this event is organized by the Law Commission of India in collaboration with the Sukhadia University, sir, we are very grateful. I believe that the outcome of this seminar will give a long way. Fruitful deliberations will stand an impactable message to the society as far as sustainable development is concerned. I wish all the delegates, participants, esteemed guests, a wonderful stay with Udaipur. Whatever the lapses you find, it is mine. And what are the good things, it rests with our Anand Paliwal, the Law Commission member and our ex-dean. I express my deep sense of gratitude to the Honorable Minister and all the dignitaries for their graceful presence in this program. I am also grateful and thankful to the Law Commission of India for giving us this opportunity to organize this fruitful event. Once again, extending my warm welcome to all of you. अब मेरी बात इसी से समाप्त करता हूँ कि हमारी महफिल में लोग दुगने उत्साह से आते हैं, क्योंकि यहाँ फूल नहीं पलके बिछाते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your wonderful words.
We also have amongst us Shri T.T. Shivkumarji. I ask Professor Anand Palipal to welcome, sir. We have Shri Sandeep Shahji, AAG, sir. And we also have Shri Chanchal Mishra ji, District Judge. Thank you and welcome all. Now I humbly invite Justice Rituraj Avasthi, sir, Honorable Chairperson, 22nd Law Commission of India, for delivering the welcome address. Please, sir. Thank you. Honorable Shri Kiran Rijiju, our most dynamic, extremely congenial, humble and charismatic Minister for Law and Justice, Government of India. Honorable Professor S.P. Singh Baghel ji, a mass leader who is so much loved and adored by his electorates. The Minister of State for Law and Justice, Government of India, my brother, Justice M.M. Srivastava, Acting Chief Justice of Rajasthan High Court, Justice Vijay Bishnoi, Justice Pushpen Singh Bhati, Justice Vineet Kumar Mathur, the Honorable Judges of the High Court of Rajasthan, Professor I.P. Trivedi, the learned Vice Chancellor, Mohan Sukhadia University, my estimable colleagues from the Law Commission of India, the learned ASG, the learned AAG, and the office bearers of the Bar Association, professors, scholars, guests, delegates on the dais and off the dais, and my dear students. Namaskar, good morning. As is deeply ingrained in our ancient culture heritage, to perceive divinity residing in each and every atom of creation, I wholeheartedly welcome you all on behalf of the Law Commission of India to this conference on sustainable development by invoking this chaupai from Goswami Tulsidas ji's much revered classic composition, Srimad Ramcharitmanas. आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जग पानी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। Ladies and gentlemen, the subject matter of this conference, that is sustainable development, was chosen as it happens to be one of the sub-themes under the broader theme of Vasudev Kutumbakam for India's G20 presidency this year. At this crucial juncture, when our country is gradually ingraining its prominence in the international arena, the selection of this theme to convey our deep care, concern, and familiar sentiments across the globe couldn't have been more germane, as it is aptly encapsulates the essence of our civilizational values, that is open-mindedness, all-inclusivity, and universal brotherhood, that is so aptly reflected in this verse from Maha Upanishad. Ayam nijam paroveti Garna Laghu Chetasam Udar Charitanam Tu Vasudev Kutumbakam. अर्थात यह मेरा अपना है, यह मेरा नहीं है, उसका है। ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। Friends, as you be well aware, the modern Western conceptualization of sustainable development finds its genesis in the Brundtland Report that was drawn up as part of the United Nations
World Commission on Environment and Development 1987. It defined it as, and I quote, sustainable development is development that strives to meet the needs of developing countries seeking to achieve a more sustainable world. Sustainable development addresses the need of the present moment without compromising current and future generations to meet their own sustainable lifestyles. This idea of sustainable development is based on three foundational pillars of economic growth, social progress, and environmental conservation. The 2020 Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations members states in 2015 provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet. At its core are the 17 Sustainable Development Goals, which are called as SDGs, which are the call for action by all countries. They recognize that ending poverty must go hand in hand with strategies that build economic growth and address a range of social needs, including education, health, social protection, and job opportunities, while tackling climate change and environmental protection. While it is admirable that the entire world now recognizes the need to shift focus from mindless, self-driven materialistic pursuit to enduring economic growth clubbed with social and environmental well-being, it is worthwhile to remember that our predominant Indian philosophical thoughts extensively incorporated these lofty principles in its writings as well as in the Indian way of life. The Vedas and Upanishads proclaim that all existence, animate or inanimate, are nothing but various manifestations of Upanishads and which ultimately proclaim that all existence are nothing but various manifestations of ultimate reality, that is Param Brahma, and that nothing exists apart from it, since every aspect of nature is itself an expression of the Supreme God. It is to be revered and worshipped. Our notion of personifying the earth as a goddess and addressing her as Bhumata or Prithvi Mata is age-old, but the same found its reflection at the international stage only in the Rio Earth Summit of 1992, when experts from across the world addressed our planet as Mother Earth. The Vedas attach great importance to environmental protection and purity. They persist on safeguarding the habitation, proper afforestation, and non-pollution. Man is strictly forbidden from exploiting nature for his selfish desires. A verse from Rig Veda says, thousands and hundreds of years, if you want to enjoy the fruits and happiness of life, then take up systematic planting of trees. There is virtually no force of nature where holistic preservation is not highlighted in the scriptures. Another verse from Rig Veda is quite comprehensive in its prescription. Do not harm the environment. Do not harm the water and the flora. Earth is my mother. I am her son. May the waters remain fresh. Do not harm the waters. Do not cut trees because they remove pollution. Do not disturb the sky and do not pollute the atmosphere. Similarly, Kautilya's immortal treatise Arth Shastra too lays down laws directing the administration to protect and preserve the environment, forest and wildlife. It suggests the need to develop abhyaranya or animal sanctuaries. This Arth Shastra further stipulates that water is to be regarded as pious collective resource and not a private commodity. Causing pollution of water bodies
obstructing or diverting a water resource, water course, damaging embankments, etc., had all been made punishable offenses. Our ancient literature is replete with umpteen such instances which throw light on the nature-friendly lives and beliefs of our ancestors. Ladies and gentlemen, we are holding this conference in the magnificent land of Rajasthan, and more particularly in this beautiful city of lakes. Hence, it would be patently unfair not to broach the unparalleled contribution of Bishnoi community in the environmental conservation. Most of us are aware how centuries ago, only to honor the principles enunciated by their guru, Jambaji, the Bishnois sacrificed their lives by hugging the trees so as to prevent them from being cut down by the king's soldiers. Upon hearing about the massacre of about 363 Bishnois by the soldiers, the king immediately gave order for halting the axing of trees and gave the Bishnois state protection for their beliefs. This Bishnoi story is a stellar illustration of a true ritual defense of the environment in India, with their sacrifices becoming an inspiration for Chipko movement in 1973. These treasured customary values that we have inherited from our ancestors find their materialization within the scheme of our constitution and other domestic laws as well. The Supreme Court of India in MC Mehta 1986 has treated this right to live in pollution-free environment to be inherent within Article 21 of the Constitution. Our Constitution under Article 51A, subclause G, also imposes a duty on every citizen of the country to protect the environment. Further, it is also the duty of the state under Article 48A to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. In another case of MC Mehta 2000, the Supreme Court has even gone a step further to observe that if the environmental rights under Article 21 are violated, compensation may be awarded not only for the restitution of the ecological balance, but also to the affected people. All these constitutional, judicial, and even international directives have been incorporated in our various laws, such as the Wildlife Act 1972, the Forest Conservation Act 1980, the Air Act 1981, the Environmental Act 1986, the Biological Diversity Act 2002, etc. Ladies and gentlemen, over the course of these 2 days, we will have the privilege of listening to an assemblage of distinguished juristic personalities, professors and scholars, and colossal wisdom and intellect. I am most certain that these sagacious and discerning deliberations will be greatly beneficial to all of us. I express my utmost gratitude to Honorable Minister Shri Rijijuji and Professor Baghelji for gracing us all with their esteemed presence. मैं सहर्ष एवं सहृदय आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार आप हमारा उत्साहवर्धन अपनी गरिमामयी उपस्थिति से करते रहेंगे. My special thanks goes to my brother Justice M.M. Srivastava and other honorable judges of Rajasthan High Court, as well as also to the professor, the learned Vice Chancellor, Professor Trivedi, for accepting our invitation. Last but not the least, we are immensely grateful to him and the Mohanlal Sukhadia University for being such generous host for this event. Finally, in conclusion, I will leave you with these
two deeply thought-provoking quotations, one by the legendary Justice V.R. Krishna Iyer and other by Mahatma Gandhi. Justice Krishna Iyer, in the case of Union Carbide, exclaimed, "In order for law to serve life, life of the millions masses, the crucifixion of the Indo-Anglo system and resurrection of the Indian system is an imperative of independence." Further, Mahatma Gandhi, while stressing the need to preserve our environment and prevent its abuse, made this ardent assertion akin to a gospel. The earth has enough resources for every man's need, but not enough for even a single man's greed. It is my sincere belief that we as a nation, and in fact, the entire planet, will go a long way in conserving our nature and environment if we choose to base our actions and policies on these touchstones. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir. Now, I would like to invite our guest of honor, Justice M.M. Srivastava, to the Chief Justice of Rajasthan High Court, to deliver his address and enlighten the audience with his words. Thank you, sir. Very good morning to all of you. Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju ji, Honorable Minister of State Law and Justice, Government of India, Professor S.P.S. Baghel ji, former Chief Justice and Chairperson of Law Commission of India, Justice Rituraj Awasthi ji, my esteemed brother, judges in the Rajasthan High Court, Justice Vishnoi, Justice Bhati, Justice Mathur, Professor I.B. Trivedi, Vice Chancellor of Mohan Sukhadia University, Udaipur, Shri Shankaran, former judge and member of the Law Commission, other members of the Law Commission of India, Vice Chairman of the Bar Council of India, Additional Solicitor General of India, officers of the Judicial Paternity, very distinguished panel who will be enlightening today and tomorrow both. My dear students of this university, ladies and gentlemen, at the outset, I am grateful to the Honorable Chairperson of the Law Commission of India, Justice Rituraj Awasthi, for inviting me and to be part of this historic moment representing the judicial paternity. This is a historic event for many reasons. Sustainable development is the subject which is chosen for discussion, deliberation in this conference. It's not merely a national issue of importance. It is an issue, it's a topic of global importance. The other important aspect is that the crucial juncture when this topic, this subject has been chosen for discussion and deliberation, we all know and we are very much aware that the conflict
between right to life and right to carry on any trade, profession, calling, and the need of development on socio-economic aspects, which is a measure of countries' development, is on rise, and nobody can deny this fact. So at this crucial juncture, discussion on this kind of topic is extremely relevant, and for that, I congratulate the chairperson of the Law Commission of India. The other important aspect is that the wide platform which has been created today to begin this conference not only has the representatives of the executive, none other than the Honorable Law Minister and the Minister of State for Law and Justice. I myself am there to be part of the judicial fraternity. My esteemed brother judges are there. The academic is also present and will be participating in this 2 days conference on sustainable development. It's a matter of great satisfaction personally for me that such a wide-based platform has been created to discuss important issues. Well, sustainable development, what is sustainable development? I understand in a simpler manner. Today, I am enjoying certain facilities, all kinds of materialistic advantages I have in my hand. What do I leave for my future generation? What do these seniors who are sitting here would be leaving behind for all of you, those who are sitting behind? Now, this is a question which needs to be answered from the perspective of what we may call as sustainable development. All of us had recently undergone a great challenge to the very human existence. That is COVID-19 pandemic, which started sometimes in the month of March 2020 until the end of 2021. We are not able to carry out our normal life. But then, did you notice many of the reports which were coming? And one of the report was that the ozone layer, which was torn and was creating and posing a threat to the very human existence if it goes beyond repair, that got automatically repaired. How could that happen? That happened because of the pandemic, all the activities stopped. All kind of industrial activities stopped. We stopped using our vehicles. All kind of pollution came down. And that is how the environment rejuvenated it. Now, that is one single example, good enough by itself to sensitize us as to what is the importance of sustainable development. As soon as the pandemic went off, everything again started, and we are again seeing the same kind of pollution in every field. Well, we cannot stop our industrial activity. We cannot stop our commercial activity, trade activities. We cannot stop moving in a vehicle. So how to ensure that we tread on the path of development, socio-economic development as a country, as a nation, and at the same time, we ensure that we are able to preserve
our environment. We ensure that the pollution does not kill our next future. How to ensure that the fruits which we are reaping today of our socio-economic growth continues and is passed on to our next generation. That, to my mind, is something which has answer in conceptualizing sustainable development. Earlier speaker, Justice Avasthi said and gave a brief background of various legislations which were framed in our country post-independence. Water pollution prevention, air pollution prevention, then forest conservation, environment protection. There are so many laws which have been enacted. But the difficulty is not in the law. The difficulty is in accepting this as a part of our duty, as a part of our culture. And it was always there. Justice Avasthi reminded us as to how our historical preserve, our principles, since ages, we treat Mother Earth as our mother. How is that? The trees are also worshipped. How is that the animals are also worshipped? You see, since long, we had been respecting and treating as our God the nature. But then when the activities started, when started treating on the path of socio-economic development, perhaps we have not been able to preserve and conserve our environment in the manner it is supposed to be done by us. I had, as a judge, we are continuously dealing with public interest litigations which are coming before the courts. And we see a kind of conflict. The conflict is between right to life and our developmental activities. And a very fine balance is required to be struck down. We need to ensure that all development activities, economic development, everything goes ahead. There are laws in place. When some kind of construction activity takes place, the environment impact assessment is carried out by a team of responsible officers and experts. And one who is undertaking this is imposed many conditions, like certain trees have to be cut. There is a provision for restoration. The cases which come before the court are that the development, a part has taken place, but the restoration is not done. A regulatory mechanism with stringent provisions is the need of the hour. There is a serious problem with regard to solid waste management. Laws are in place, but then how to deal with non-adherence to those regulatory mechanisms? The consequences which are provided under the laws, in my understanding, are not enough. And this I am saying because the Honorable Chairperson of the Law Commission of India is here. Law Commission is a body created to carry out research and then make suggestions to the government for bringing new legislations and also to suggest new amendments. The laws are there, but the question is more of implementation. I am reminded of a place somewhere in the world, I will not say,
where the students are going on the road with a long stick in their bicycle and a big basket. Nobody asked them. The moment they see something on the road lying, they immediately pick it up, put it in a box. And whenever they find another big box of the corporation installed somewhere, they dump there. You see, sustainable development is something which is to be perceived by us as something which we have to follow in all spheres, at all stages, and by everyone. As a culture, that culture is there. Just as Avasti said, this culture is very much there. Probably we have forgotten it, if not entirely, to a great extent. So this culture needs to be revived. A revival cannot be by law only. Revival can be by creating awareness. Revival by putting in place best practices. I am sure that when so many great minds have come together, they will not only discuss as to what is the law, but also discuss what are new innovations which can be suggested. After all, there are ways being suggested to replace the traditional form of generation of electricity by renewable energy sources and, of course, green energy. Now that is coming out with a new option, solar energy. Minimize extraction of mineral, coal, etc. Thermal power generation technique is suggested to be substituted by solar energy production, all other forms of green energy production. Even water, I came to know that there is a startup named Udaipur. And what it has done is it is developing a water collection mechanism from the atmosphere, from the environment, without tapping any other water source. Because tapping water source from the natural sources like river, pond, involves so many things. And it does cause damage to the natural preserve. Now that is in the development, but only out of my own interest, I was reading into it. So today we need to innovate, have original ideas, how to preserve and conserve our environment. And therefore, the traditional way of dealing with damages which are incidentally caused to the nature because of all kinds of development have to be viewed from a very different perspective. And this perspective has to be developed by the innovators. I think if that is done, certainly we will be able to get something very new out of this conference. I am extremely thankful for giving me a patient hearing and thankful to the organizers, the Law Commission and the Mohan Sukhadia University for giving me an opportunity to share my thoughts and ideas with all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your inspiring and uplifting words. Now I humbly invite our distinguished guest of honor, Honorable Minister of State of Law, Professor S.P. Baghel, sir, to grace the podium and address the gathering. Please, sir. भारत सरकार के बहुत ही डायनेमिक लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर आदरणीय श्री किरण रिजिजू साहब, भारत के विधि आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी जी,
राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री MM श्रीवास्तव जी, भारत के विधि आयोग के माननीय सदस्यगण न्यायमूर्ति KT शरण जी, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर आनंद पालीवाल जी, विधि आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर राका M करुणानिधि जी, न्यायमूर्ति श्री विजय बिश्नोई जी, न्यायमूर्ति भाटी जी, न्यायमूर्ति माथुर जी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IB त्रिवेदी साहब, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री रस्तोगी जी, विधि विभाग के अध्यापक अध्यापकाएं, छात्र छात्राएं, मीडिया के बंधु, यह प्रसन्नता की बात है कि भारत का विधि आयोग एवं लॉ कॉलेज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा भारत में सतत विकास के विकासवादी और कानूनी दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें आने का मौका मिला और विद्वान वक्ताओं के इस विषय पर विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आज जब दुनिया लगातार तीव्रता से विकास की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, यह अनिवार्य हो जाता है कि सतत विकास के विचार को पूरे सामर्थ्य के साथ पूरा विश्व अपनाए। जैसा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी ने कहा था, गांधी जी को कोट किया था कि पृथ्वी सब लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन सबके लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कितने साल पहले आज के हमारे स्वभाव को देखते हुए गांधी जी ने 70 साल पहले इस बात को कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास विचारधारा भारत के सतत विकास एजेंडे की आधारशिला है। आज हमारे देश बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को लक्ष्य मानते हुए सामाजिक समावेश और गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आज हम गरीबी दूर करने के लिए साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सतत विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को भी ध्यान रखा जाए। सतत विकास लक्ष्य आवश्यकता विश्व के देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, परमाणु परीक्षणों और कार्बन उत्सर्जन के फलस्वरूप ओजोन परत के क्षरण के कारण उत्पन्न खतरे में हुई है। जैसा न्यायमूर्ति जी ने बताया था कि पेंडेमिक काल में अपने आप ओजोन लेयर रिपेयर हो गई, तो मुझे याद आया कि मैं इतने साल से आगरा में रह रहा हूँ, मेरे घर से ताजमहल कभी नहीं दिखा, जब दिखा तो कोरोना काल में दिखाई पड़ा। तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिएगा कि इस पर्यावरण का कितना महत्व है। सतत विकास का विचार हमारी परंपराओं, त्योहारों और धर्म ग्रंथों का प्रमुख विषय रहा है। आज इस सम्मेलन में मैं भी गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करना चाहूंगा कि छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इसका अर्थ है भारतीय दर्शन और योग में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं गगन को पंच तत्व कहा जाता है। हाल ही के दिनों में पूरे विश्व ने सतत विकास के महत्व को समझा है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास को 2030 तक प्राप्त करने के लिए 17 SDG की पहचान की है। इन लक्ष्यों को जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी को दूर करने तक कई तरह के मुद्दे शामिल हैं और ये सभी आपस में जुड़े हैं। सतत विकास केवल किसी एक देश या संगठन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। इसलिए G20 जिसकी अभी एक मीटिंग आगरा में हुई है, उसकी थीम हमारी मंशा बताती है। हमारे देश के G20 अध्यक्षता का विषय वसुंधैव कुटुंबक, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो सतत विकास और पृथ्वी की रक्षा करने का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। आधुनिक दुनिया ने चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है, जिसे इंडस्ट्रीज 4.0 के रूप में जाना जाता है। अब मैं इसके थोड़े विस्तार पे नहीं जाना चाहूंगा। जब सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने की बात आती है तो भारत दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2021 से लेकर 2030 की अवधि के लिए 8 लक्ष्यों को रेखांकित किया। हाल ही में प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को
इंडिया एनर्जी वीक में 20% एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है, जिसे हम E20 भी कहते हैं। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने का लक्ष्य बनाया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। मैं इस अवसर पर उस सरकार की इस सतत विकास में योगदान की चर्चा करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 अर्थात SDG तय होने से पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे लोगों को विशेष रूप से गांव में रहने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिली। मैं बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमने अपनी दादी और नानियों को शौच के लिए सड़क पर बैठते हुए देखा, फिर गांव के किसी बुजुर्ग का उस रास्ते से गुजरने पर या हेडलाइट पड़ने पर उनको खड़े होते हुए भी देखा। मुझे लगता है इससे ज्यादा नरक कुछ हो नहीं सकता। जो भारत ये कहता है कि खाते हुए कोई भी आ जाए तो हमें उठना नहीं है, ये अन्न का सम्मान है। बाकी खाते हुए उठने में कोई आंतें नहीं पलटती हैं और ना कपड़े खराब होते हैं। लेकिन ये कल्पनाएं हम सब ने ये देखा है कि महिलाएं शौच के लिए सड़क पर बैठा करती थी, खेतों में बैठा करती थी और सूर्योदय से पहले जाया करती थी और सूर्यास्त के बाद जाया करती थी। इस अंधेरे का लाभ बदमाशों ने भी उठाया। जब से ये इज्जत घर बने हैं, मुझे लगता है कि वास्तविक बलात्कारों की FIR में कमी आई है, ऐसा मेरा अपनी सोच है। मैंने वास्तविक शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि न्यायमूर्ति लोग बैठे हैं, उन्हें पता है कि कुछ FIR ऐसी भी होती हैं जो सच से परे होती हैं। आयुष्मान योजना के तहत 17.88 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। इसमें से 3.12 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल फ्री में ले रहे हों, यहाँ तो छात्र बैठे हैं। अगर दिल्ली के 5 सितारा होटल में ये सेमिनार हो रही होती तो LB का पर्स और बर्बरी के पर्स वाली कुछ महिलाएं बैठी होती और जितने का LB का एक बैग आता है उतने में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि वो अभी तक किसी के पास था नहीं। केवल 20,000 का हम इज्जत घर दे रहे हैं, जितने में अच्छे घरों में वॉश बेसिन की टोटी आती है एरा वगैरह कंपनी की। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये अंत्योदय करने का काम किया है। गांव में जब बीमार होता है तो मनरेगा के मजदूरी के 100 दिन के बचे हुए कुछ रुपयों को लेकर के किसी स्थानीय डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। शिक्षा और चिकित्सा सबको मेरा राय है कि एक होनी चाहिए। अगर डाइस पर बैठे हुए लोगों को वायरल है और मनरेगा के मजदूर को है तो दवाई तो एक ही होनी चाहिए। तो वो 30, 35, 40, 50 रुपए लेके जाता है और डॉक्टर कहता है 5 दिन का कोर्स, वो कहता है भाड़ में जाए आपका कोर्स, 40 रुपए की दवाई दो। तो बिना रैपर की लाल पीली गोलियां कागज में लपेट के दे देता है। अब इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा क्योंकि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति परिवार उसका इलाज हुआ करेगा। जिस देश में 45 करोड़ लोगों ने कल तक मोदी जी के दोनों कार्यकाल में बैंक की शक्ल ही नहीं देखी थी। इस शताब्दी का सबसे अच्छा एब्रिविएशन मुझे लगता है DBT। ये मुझे WHO से भी अच्छा लगता है, यूनिसेफ से भी अच्छा लगता है, यूनेस्को से भी अच्छा लगता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। राजीव गांधी जी ने कहा था कि वो 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। जब प्रधानमंत्री जी को पता ही चल गया था तो इस चोरी को रोकने का काम उनका था, न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का था। केवल जैसे जीरो बैलेंस पर खाता खोला तो राजस्थान से बहुत विरोध होता है। तो कहा ये जीरो बैलेंस में क्यों खोल रहे हैं? तो मैंने कहा था पीछे से माल आने वाला है, विधवा पेंशन के रूप में, विकलांग पेंशन के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में, गैस के सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में। मैं तो अपने को शामिल करता हूं कि अगर यही पैसे
हाथ मतलब गिन करके एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, सरपंच, प्रधान, एमएलए और एमपी के हाथ में आ जाएगा तो मुझे लगता है उस 85% में हमारी भी कुछ हिस्सेदारी हो जाएगी। तो ये डीबीटी करके 2000 किसान सम्मान निधि की किस्त साल में 3 बार आती है, तो किसी माई के लाल की दम नहीं है कि 1999 रुपए 99 पैसे भेजे, वो पूरे 2000 आते हैं। इसलिए 85% की चोरी को ये भी सतत विकास की दिशा में किया गया एक कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं गांव का रहने वाला हूँ। छप्पर में आधे में हम लोग सोया करते थे और आधे में भैंस बनती थी, और रात में भैंस पेशाब करते हुए पूंछ हिलाती थी तो कई बार हमारे मुंह पे गिरा करती थी। एक रजाई में 3 लोग सोते थे, इधर वाला खींचता था तो उधर वाला खाली हो जाता था। तो ये दर्द को प्रधानमंत्री जी ने समझा और गाँव में और शहर में प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना हुई है, और जिसकी मालकिन हमारी गांव की महिला है। मुझे लग रहा है कि सतत विकास की जगह मैं कुछ इस पर ज्यादा बोलूं, कुछ व्यवहारिक बातें भी आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे किरण रिजिजू साहब ने एक्सेस टू जस्टिस के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जैसे टेली लॉ, प्रो बोनो स्कीम। टेली लॉ के अंतर्गत 1 लाख से अधिक जनसेवा केंद्रों द्वारा लगभग 31 लाख लोगों को कानूनी सलाह प्रदान की गई है। 2026 तक 90 लाख लोगों को सलाह देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत 5817 प्रो बोनो अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। इससे आप जुड़ें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि उपस्थित विद्वान लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब विकासशील देश विकास की दिशा में आगे बढ़ने लगे तो विकसित देशों की चिंता सतत विकास के संदर्भ में बढ़ गई है और विकासशील देशों को पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। ये विकसित राष्ट्रों की एक गुंडागर्दी है, जबकि पर्यावरण प्रदूषण करने के लिए विकसित देश हमसे अधिक जिम्मेदार हैं। हम 2 सदियों से अधिक गुलाम रहे हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। पश्चिम देशों का अनुसरण करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चों से ये भी कहना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट शायद आपको पूरे रट गए होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछेंगे तो शायद उतने कम रहते हैं। तो राइट की बात कहने के लिए उसी को अधिकार है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को बखूबी निभा रहा है। आप समाज में जाएंगे तो लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताएंगे, भी सतत विकास की दिशा में कदम होगा। दूसरा ये, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल ले रहे हो, मात्र 20,000 का शौचालय ले रहे हो, 8 करोड़ लोगों के पास अभी कंडे और लकड़ी से खाना बन रहा हो, 45 करोड़ लोगों ने इस देश में बैंक की शक्ल नहीं देखी हो, इसका मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, 11 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहे हैं और 11 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। तो यहाँ से ये माइंड सेट करके जाना कि ये देश एलीट क्लास का नहीं है, ये पैसे वालों का देश नहीं है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश के आजाद है। कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। इस फुटपाथ पर आबाद हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री जी ने तमाम घर दिया है, तो उसमें गैस भी दी है, तो उसमें शौचालय भी दिया है, तो 5 किलो गेहूं और चावल भी उसमें देने का काम किया है। तो 1000 रुपये विधवा पेंशन भी, अगर कोई विकलांग है तो दिव्यांग है तो दिव्यांग पेंशन भी, वृद्धावस्था पेंशन भी, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी, जनधन योजना की तमाम चीजें। यदि वो श्रमिक है, ये सतत विकास में ये 8 साल का बड़ा योगदान है। अगर वो लेबर है, उदयपुर को आने वाली सभी सड़कें सुबह भर के आती होंगी। मेरी परिभाषा है जो श्रम करे वो श्रमिक, सरकार की परिभाषा है जिसका लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन है वो श्रमिक है। इसलिए आपकी ये सामाजिक जिम्मेदारी हो जाती है। और लेबर की परिभाषा पहले मैं समझता था कि बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जिनका फंड कटता है, नहीं, मिट्टी का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, सड़क बनाने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मनरेगा के समस्त मजदूर। उस कलेक्टर को तो सस्पेंड ही कर देना चाहिए जिसके जिले में मनरेगा के मजदूरों की संख्या ज्यादा है और लेबर कार्ड जॉब कम है। इसका मतलब उन्होंने ये इस योजना को बताया नहीं। ऐसे सतत विकास की दिशा में अंत्योदय करते हुए कक्षा 5 तक वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण ऐसे श्रमिक को
5 तक 100 रुपए, मिडिल में 150 रुपए, हाई स्कूल में 200, इंटर में 250, डिग्री कॉलेज में 3000, ITI में 800, पॉलिटेक्निक में 3000। यदि वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो 8000 रुपए महीने, मेडिकल कर रहा है तो 12000, और PhD में रजिस्ट्रेशन है तो 15000 रुपए महीने मिल रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रमिकों की संख्या कम है, जानकारी का अभाव के कारण उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे लोगों की बेटी की शादी में 75,000 रुपए, पहली बच्ची पैदा होने पर 35,000, दूसरी बच्ची पैदा होने पर 35,000, और यदि वो मर जाते हैं तो ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट अंत्येष्टि के लिए भी 15,000 रुपए मिलते हैं। ये खासतौर से विधि विभाग के छात्रों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दिन वो किसी मलिन बस्ती में जाकर के, अगर जब तमाम चीजें गूगल करके दिन भर देखा करते हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को देख करके अगर आप उनको बता देंगे। आज शनिवार है, कुछ लोग शाम को तेल चढ़ाने जाएंगे शनि भगवान को, ही इज द गॉड ऑफ जस्टिस। तो आप एक टैंकर तेल चढ़ा देंगे तो आपको उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना आप अदम पैरवी, ये उर्दू का शब्द है, माने बिना पैरवी के निरुद्ध जेल में बंदी को अपना वकालतनामा लगा करके अगर 15 मिनट की बहस करके अगर आप उसको छुड़वा देंगे तो मुझे लगता है शनि भगवान ज्यादा खुश होंगे। ये केवल ये हमारी योजनाएं हैं, ये प्रो बोनो हमारी भारत सरकार की है या न्याय बंधु है या ये सब है। लेकिन मैं जब IMA के डॉक्टरों से कुछ बातें, थोड़ी कुनैन की गोलियां भी खानी चाहिए। जब मैं IMA के डॉक्टर से कहता हूं तो मेडिकल का लगा देते हैं कैंप, रोटरी क्लब, लायंस क्लब से कहता हूं तो कुछ ना कुछ चैरिटी कर देते हैं। हमारी सरकार की योजनाएं ना हो तो कोई वकील साहब कभी जेलों का विजिट करके और किसी गरीब आदमी जो वकील की कमी के कारण बिना मतलब में जेल में निरुद्ध है, उसके लिए पैरवी करते हुए मैंने कम लोगों को देखा है। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कभी कभी चले जाए करना। मुझे किन्हीं कारणों से जेल में जाना पड़ा और वो गुनाह ये था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने मैं चुनाव लड़ गया, फिर उनकी पत्नी से लड़ गया, फिर उनके भाई से लड़ गया, और अभी 8 महीने पहले फिर उनसे जाके लड़ गया करहल में जाके। तो सरकार आ गई उनकी, उन्होंने एक मुकदमा कायम करा दिया, मुझे जेल जाना पड़ा। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जेल में कई कैदी एक कैदी को लेकर के आए कि साहब ये इसकी सुनो, तो वो उड़िया भाषी था तो हिंदी नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने कहा आप लोग जितना समझ पाए हो, तो उसने कहा कि मैं गंजाम जिले का उड़ीसा का रहने वाला अजय साहू हूँ, टूटी फूटी जो मैं समझ पाया। और मैंने सुना कि फिरोजाबाद जिले में चूड़ियों का कारखाने है, सबको काम मिलता है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पकड़ के आया, किसी उसके नीचे सो रहा था वो शोरूम के, तात्कालीन उत्तर प्रदेश की पुलिस, हमारी वाली नहीं। तो उसको पकड़ लिया। एक दिन पहले कोई फैक्ट्री में चोरी हुई थी तो उसको 379/411 में लोहे की चोरी और बरामदगी में जेल भेज दिया। तो 13 महीने से निरुद्ध था, 30 किलो लोहे में जिंदगी के 13 महीने बेहतरीन जवानी के उसके गए। उसके घर वाले ढूंढते रहे बड़े बड़े शहरों में। तो मैंने कहा दुआ करो कि मेरी बेल हो जाए, मैं बाहर जाते हुए मदद करूंगा। बाहर जाके मैंने पहला काम किया कि उसको फोन किया। ना मैंने कहा कोई नंबर हो, तो उसने पजामे के नाड़े में सिगरेट के रैपर पे लिखा हुआ एक नंबर 13 महीने से बचा के रखा था, मुझे दिया। यहाँ मैं उन कैदियों की गलती बताऊंगा कि जो बाहर गए थे, एक पोस्ट कार्ड लिख देना चाहिए था, जेलर को भी लिख सकते थे और मजिस्ट्रेट साहब को भी देखना चाहिए था जी कि NSA वाले बाहर चले गए, गैंगस्टर वाले चले गए, ये बच्चा क्यों निरुद्ध है। तो मैंने उनके जब फोन किया तो उनके घर वाले 11 दिन बाद आए। तो मुझे गुस्सा लगी कि एक तरफ आपका बच्चा 13 महीने से नहीं मिल रहा था, पता होने पर आप 11। तो उन्होंने कहा हम पैसे का इंतजाम कर रहे थे। मैंने कहा कितने पैसे लेके आए? बोले 8000। ऐसे भी लोग हैं देश में, इसलिए छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये हम अगर ऐसे लोगों की मदद कर देंगे। तो जब 1947 में आजादी के 100 साल मनाएंगे तब हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, हम सुपर पावर होंगे, हम नंबर 1 इकोनॉमी होंगे। आज भी हम 5 ट्रिलियन US डॉलर पे पहुंच गए हैं। IMF कह रहा है कि हम 10 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी पे 10-5 साल में पहुंच जाएंगे। देश के बारे में इसलिए सोचना है कि भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तक है, हिमालय इसकी मुकुट है।
गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पंजाब और बंगाल दो इसके मजबूत कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी जंघाएं हैं, विंध्याचल इसकी कमर है, नर्मदा इसकी गर्दनी है, इसके पैर जो है कन्याकुमारी हैं, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, बूंद बूंद अमृत है। हम जिएंगे इसलिए, हम मरेंगे इसके लिए, इसलिए सतत विकास हम सबको मिलकर करना है। जब तक मेहता जी की रिट नहीं हुई थी, जब तक भारत का संविधान नहीं बना था, तब बिश्नोई लोग, जैसा आपने जिक्र किया है कि पेड़ों से चिपक जाते थे। जब वन अपने आप में एक, जैसे किरण जी अभी कह रहे थे कि उनके यहाँ अरुणाचल में फॉरेस्ट प्रॉब्लम है, 1 मीटर नहीं आप चल सकते, तब वो पेड़ नहीं कटने दे रहे थे। हिरन के बच्चों को बिश्नोई हमारी बहनें स्तनपान करा देती थी। हमारे घरों में भी गौरैया आटा, रोटी बनते हुए आटा खा जाती थी। तो ये एक इकोसिस्टम है और हमें रेट हुई है बाद में, सुप्रीम कोर्ट आया बाद में। शिव परिवार देख लो, इकोसिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल। तो जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं भारत के बारे में, वो बेहूदी बात करते हैं। शंकर जी की सवारी नादिया, माँ दुर्गा की सवारी शेर, प्री भोजन है, लेकिन शेर नादिया को नहीं खा रहा है एक फैमिली में। गणेश जी की सवारी चूहा और शंकर जी के गले में सांप, सांप चूहे को नहीं खा रहा है। गणेश जी की सवारी चूहा और कार्तिकेय जी की सवारी मोर, और मोर चूहे को नहीं खा रही है, मोर सांप को नहीं खा रहा है। हमें किसी से नहीं सीखना है, अमेरिका से और रूस से हमें किसी से नहीं सीखना है इकोसिस्टम को, सतत विकास को, पर्यावरण को, ओजोन लेयर को, वाटर हार्वेस्टिंग को, ग्लोबल वार्मिंग को, हमें किसी से नहीं सीखना है। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारी धर्म में, हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद और ऋचाओं में ये सब वर्णन है। सवाल है उनको पुस्तकों से निकाल के व्यवहार में शामिल करना है। इस सतत विकास में खासतौर से ये विधि विभाग के छात्र छात्राएं और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, हम अगर लोगों की गरीबी देखते हुए अगर एक दिन अपना वकालतनामा लगा करके और कुछ हम कुछ 5-10 मिनट की बहस करके अदम पैरवी में निरुद्ध कैदियों को अगर हम बाहर लाने में सफल हुए, तो हम आज का ये सेमिनार एक सफल है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मुझे अपनी बात कहने का अवसर। Thank you very much, sir, for your kind and encouraging words. I am profoundly delighted to invite our esteemed chief guest, Honorable Minister for Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju, the man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas, to kindly deliver his address and enlighten the audience. Thank you. My colleague, Minister of State, Professor S.P. Singh Bagelji, the Chairperson of the Law Commission of India, Justice Rituraj Awasthiji, the Acting Chief Justice of the High Court of Rajasthan, Justice Manindra Mohan Srivastavji, Honorable Judges of the High Court of Rajasthan, the members of the Law Commission of India, most respected Vice Chancellor of Mohanlal Sukhadia University, Professor I.V. Trivedi ji, the other judges of the district courts and subordinate courts, Additional Solicitor General of India, all other law officers, member of the bars and the Bar Council and the Bar Association, the invited guests present here, the faculty members,
and my dear students. First of all, every time I'm here in Udaipur, I get excited. Just being in the beautiful city of Udaipur, there is something very energizing spirit in Udaipur because of the location, because of the way the people are here, because of the culture. Everything about Udaipur is so vibrant and so positive. I would like to thank the Law Commission of India, Justice Awasthi and his team, and particularly Professor Paliwalji, who have designed this event in such a way that our honorable judges from the Rajasthan High Court and other dignitaries are gathering here to make some valuable contributions, share our thoughts, views on a subject which is so relevant to all of us. I'm sure during these various sessions, technical sessions, where the experts will be delivering their ideas and their suggestions, and also I hope the students and other members who would be present here will actively participate and make this conference, these seminars, very useful and memorable. I would like to thank the Mohanlal Sukhadia University also for giving the space along with very beautiful campus, the students, and hosting this seminar in this prestigious university. The topic itself is so relevant that when we talk about the sustainable development, not only in India, but globally, there are so many things to offer. Our previous speakers, Riturajji, my colleague, Professor S.P. Singh Baghel, our Honorable Acting Chief Justice, Srivastavji, and respected Vice Chancellor, they have made some valuable remarks. And I hope during the technical session, this will be elaborated. Lots of lights will be thrown into it. And the outcome from this seminar will be brought into practice as much as possible in terms of framing right policies, right legislation, and appropriate judiciary actions. Now, we all know, as being mentioned, that the environment and sustainable development is part of India's ancient culture, ancient heritage. It is widely been described all over how India and Indian civilization treat environment as a way of life. But unfortunately, the way we conduct ourselves, the way we live our life has become a threat to our own existence. The quest to achieve economic growth and the haphazardous manner in which the things are happening around, this is threatening our own existence. We all know the life of Earth is not infinite. The Earth came into existence at a certain point of time, and it will not remain indefinitely. But we have a moral obligation and duty that as long as this Earth is there, and as long as we live in our period, we must do justice to the planet Earth. It is our bounded duty. It is our culture. It is our civilization. So as I said, the way we are moving towards with our quest to gather greater momentum of economic growth, invariably we are destroying ourselves. I'm not going to make a detailed remarks on this matter, but just to understand that
in our own lifetime, how the damages are so extensive. And I fear that we may cross that barrier where the return back to the normal will be impossible. So we are reaching an inflection point where if we don't control, we don't create a proper goals, proper target for ourselves, the human beings will be too late. And as it is, we humans have conquered the earth. The other species, including the plants, the environment, are at the mercy of the human beings. I remember at the time when we were small, the environment was all over. We were just part of the environment. Now we have captured the environment. When we were small boy, moving around in the village, the basic training given to us where you can cut the trees as much as possible, because the village is overgrown with trees and forests. So it was difficult for the human existence. The villages are encroached by the wild animals. So the lessons taught to especially the male boys are that boys have to kill wild animals. Boys will have to cut the trees. Boys have to chop the forest grasses as much as possible. And that is something being treated as a symbol of manhood, that how much you can destroy forest. Because that time the conflict was such that the human existence was totally at the mercy of the environment. But now, as the roads have come, as the electricity is being established, all the modern gadgets are available, why do we need to cut the trees? Why do we need to kill the animals? They are no more threat to our existence. But still, I feel so disturbed. The educated people, they go for hunting. And the more wealthy people, they are hell-bent on destroying the forests. Despite the court's order to ban the felling of the trees, despite the government policies to protect the forest through various regulations and acts, still people will manage to get themselves involved in all kind of illegal felling of trees and destroying the environment. I feel sad. In my home state, we have so much of pristine forests. Still now, we have more than 80% of the areas covered by forests, but you hardly see any, animals or birds in the forest. It's all empty, silent. It's very sad. So once when I was newly elected as member of parliament, long time back, I told the parliament that in my village, I can't see monkeys and beautiful birds, but I see monkeys and birds in Delhi. Actually, we feel like there's a monkey menace in the cities. So the life in our village has changed. And my lifestyle will be different from a person who is living in Udaipur, or any part of Rajasthan. We were facing the brunt of the nature. Here you are facing the deficiency of the nature. You have deficiency in rainfall. You have shortage of forest-covered, grass-covered areas, which is abundance in our place. So our life and your life is totally different. We have to adapt to the situation. Now, the things are reversing. So that is why I feel that the way we live and the way we used to live, there is a vast difference. In the Western world, where they don't have the philosophy of what we have in India, but they have established certain goals and they have been able to achieve it. Now see the conflict. India's per capita income today stands at close to $2,100 per annum.
So an average Indian earns $2,100. So in American Western countries, or in some of the Eastern countries like Singapore, Hong Kong, Japan, the high net worth people, the per capita income is above $50,000. Even in China, which is still considered as just an upper income country, they have crossed $12,000 per capita income. Now, India aspires to reach a middle income country next few years' time. And India aspires to become a global economic leader. Now, for that, we have to achieve economic growth. Suppose from $2,100, we jump twice, means we double our income. Then we become $4,200. When India becomes a country with an average per capita income of $4,200, then our consumption will become double. We will consume double of food items, all daily needs. Whatever we do, we will buy more vehicles, we will burn more fuels, we will use more materials. And now if we become 4 times richer than what we are now, then we become $8,400. So when India becomes a country of per capita income of $8,400, that still is not higher income. That will still be treated as a middle income. Now you can imagine what will happen to our environment, how much we will consume, where is the land space, how much agriculture produces will be required because we will eat more, we will waste more. So where are we heading to? The only way to maintain our economic growth, increasing our life standard, and also to maintain environment is a sustainable development. Now this sustainable development is a key word. I'm not going to deliberate it extensively, but just to drive some of the points. Now, we are hosting G20 summit. Now, this is India's presidency. Prime Minister has rightly coined the theme of this year's G20, one world, one family. This emerges from Vasudhaiva Kutumbakam. And with this, we have infused the Indian values. Now, sustainable development is a key part of every sectoral discussions which we are going to have. And as the Law Commission is organizing this event, of course, this is not a very global or international in nature, but during this India's presidency of G20 summit, I feel this seminar becomes very pertinent. It's very, very relevant. And I will try to get the outcome of this seminar and share with my colleagues from the G20 countries and all other important countries. Whenever we have bilateral summit, we share India's ideas, India's policies with our neighboring countries and our all friendly countries. So when we talk about sustainable development, you all know the targets are being set. Now, these 17 sustainable development goals which have been identified are very well known. It is a United Nations mandate and every country has to work towards that. Some of the policies which government of India has adopted, you will be surprised. In last 8.5 years, India has in fact achieved the target which we had set much before the timeline. It is a very encouraging for all of us. For example, we are talking about the green economy. Now, green economy is a concept which every country must adhere to.
When we talk about India's green economy, what comes into our mind? India's solar energy, wind energy, and our biogas potentials. We have immense potential to harness. Even if we can harness 80% of the potentials that India has, we will overshoot our target. Now, India is already a global leader in green energy market. Recently, the cabinet has taken lots of decisions. I'm not going to spell out in details here, but you can access to some of the government decisions which we have taken in recent times to further our objective and aims to achieve all the sustainable development goals. Now, for example, Prime Minister had mentioned about the 3 pillars for green growth. Number 1 is increasing the renewable energy production. And when we talk about increasing renewable energy production, I just give you one example. In 2014, our ethanol blending with petrol was only 1.5%. And then subsequently, Prime Minister Modi ji set the target of 10%. And we achieved 10% target much before the stipulated time. And now we have moved towards the target of 20% ethanol blended with the petrol. That means today India is a global leader in green energy. And now second point is we have to reduce our dependency on the use of fossil fuels. There's no other way out. We have to reduce it. And then we have to move towards the gas-based economy. As I said, India has to grow. Now, the Western countries, when the environment was not a big issue, when the climate change was not even a part of discussion, they had attained their level of development. They became rich. By the time India started growing, this issue has become a reality. Now, we are not closing our eyes, but we are telling the Western world that India is a responsible country, but we will not compromise with our economic growth because we want Indians to have the same standard of life which the Western people are enjoying. हमारा पास भी तो अधिकार है ना कि पश्चिमी देशों में जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी जिया है और जैसे जी रहे हैं, कम से कम उसका आसपास तक उस तरीके से जीने का हमारा पास भी अधिकार है. लेकिन हम अपना जिम्मेदारी को हम नहीं भूल सकते. क्लाइमेट चेंज और इस पृथ्वी को बचाए रखना ये सबका जिम्मेदारी है. लेकिन इंडिया का जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बढ़ता है कि अगर इंडिया सक्सेस होता है, इंडिया कामयाब होता है, तो विश्व कामयाब होता है. अगर इंडिया विफल हो जाएगा तो विश्व विफल हो जाएगा. हमारा जो परसेंटेज ग्लोबल शेयर में जो हमारा परसेंटेज है वो इतना ज्यादा है कि आज विश्व के हर कोने में हर देश जब किसी भी एक सामूहिक संयुक्त राष्ट्र का कोई भी विषय होता है तो चीन और भारत की ओर देखता है. और हम क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमसे अपेक्षा भी ज्यादा रखते हैं. इसलिए मैं आपको जिक्र किया कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में हमने कैसे सफलता प्राप्त की है और हमने इतना एम्बिशियस टारगेट रखा है जो हम मानते हैं कि हम कर पाएंगे. आज जब विश्व का किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रखते हैं तो बहुत गंभीरता से दुनिया सुनते हैं उसको. जैसे कि जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 में हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मैं कोट करता हूं. The road to fighting climate change is through climate justice. ये प्राइम मिनिस्टर का वाक्य है और ये क्लाइमेट जस्टिस का शब्द प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस्तेमाल किया. The road to fighting climate change is through climate justice. At the root of
climate justice is the principle of being large-hearted. Climate justice is also about thinking of bigger and long-term picture. The sad reality is changes in the environment and natural disasters impact the poor the most. Climate justice is inspired by a vision of trusteeship where growth comes with greater compassion to the poorest. Climate justice also means giving the developing countries enough space to grow. When each and every one of us understands our individual and collective duties, climate justice will be achieved. जब प्रधानमंत्री जी ने ये फिलॉसफी को दुनिया के सामने में रखा, शुरू में कई लोगों को समझने में दिक्कत भी हुई और समय भी लगा, लेकिन अब दुनिया बिल्कुल समझ गया है कि मोदी जी के जो कंसेप्ट है, उसका विजन है, यही विजन दुनिया के लिए सबसे सही विजन है। ये सबने माना है। इसलिए आज जब हम G20 का प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, तो जो भी सेक्टर, जैसे कल G20 का फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक का गवर्नर्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही तरीके से भारत का विजन को रखा है। और आने वाले दिनों में साल भर का जो बैठकें होंगी, उसमें भारत लीड रोल ले रहे हैं और ये एनवायरनमेंट के इशू, ग्रीन इकोनॉमी, ये सारा चीज बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करने वाले हैं। इसलिए खास करके जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली यहाँ लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत गंभीरता से ध्यान पूर्वक आप हिस्सा ले करके फिर ये सारे मुद्दे को आप समझना है। फिर जब आगे आप कार्य करेंगे, कहीं भी आप किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और अपने फ्यूचर जो कंडक्ट है, इसको भी आप सही तरीके से अपना सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारा भारत के जुडिशरी और मेरे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हम लोग का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जैसे कि हम ई कोर्ट्स के बारे में बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं और अभी तो लगभग सबको देश भर में पता चल ही गया है कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट जो अभी हमने फेज 3 शुरू किया है और 7,000 करोड़ अभी जो बजट पास हुए हैं, उसमें बजट आवंटन किया गया है। और ये जो फ्यूचर पेपरलेस इंडियन जुडिशरी की दिशा में जो हम जा रहे हैं, ये एक दृष्टि से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तो नहीं चाहते कि आने वाला दिन में कोई पेपर भी हमारे सामने में रखे। एवरीथिंग हैज टू बी डिजिटल। जब हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, हाई कोर्ट का प्रिंसिपल बेंच जोधपुर में है और आपके दूसरा जयपुर बेंच है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। आगे जाकर के हमको अलग बेंच बिठाने का जरूरत भी नहीं होगा। ये जो मेवाड़ रीजन है उदयपुर में, यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यही होंगे। यहाँ का वकील आपको जयपुर जोधपुर जाने का जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, बताइए। आप 400-500 किलोमीटर गाड़ी चला के जाएंगे, कितना पेट्रोल डीजल फूकेंगे। इकोनॉमी के लिए वो सस्टेनेबल तो नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी कितना खतरनाक है, आप सोचिए। क्यों हमारा वकीलों को इधर से उधर भटकना पड़े। आप जहां है वही आपका कोर्ट होना चाहिए और जज आपको वही जुड़ेंगे। तो आगे जो हम वर्चुअल कोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपरलेस इंडियन जुडिशरी के दिशा में हम जो जा रहे हैं, ये हम बहुत ही लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं। मैंने भारत का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ साहब से कई बार मेरा बातचीत हो चुके हैं। अब हम इसको पूरा फाइनल शेप दे रहे हैं। सारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितना हमारे बाकी कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स जितना भी हमारे बने हैं,
सारे के सारे टेक्नोलॉजी की लिस्ट पूरा हम लोग वेल इक्विप्ड की दृष्टि में सब कामयाब हो रहे हैं। और थोड़ा सा और पुश देना है। मैं मानता हूं जो ई कोड फेज 1 में, उसमें तो आप लोग जानते हैं मामूली सा एक कंप्यूटर मशीन रखना था, टाइपिंग करना था, मैसेज भेजना था। वहां से हम कहां पहुंच गए हैं। और जब हम ई कोड फेज 2 में जो हमने कामयाबी प्राप्त किया, उसी के वजह से तो कोविड के समय में हमारा कोर्ट चलता रहा। आप सोचे भारतीय कोर्ट्स बंद नहीं थे कोविड के दौरान। हमारे जजेस और हमारे वकील न्याय दिलाने का लगातार काम करते रहे। वो क्योंकि हमने ढांचा बढ़ाकर रखा हुआ था। 2015 में मोदी जी के नेतृत्व में जब ई कोड फेज 2 को हमने बल दिया, तो कई चीजें हमने देश भर में बिछाया, जिसकी वजह से कोर्ट के सामने में काम करने के लिए सुविधा हुआ है। अब जब हम ई कोड फेज 3 के ओर जा रहे हैं, अब तो हम बहुत ही अलग बोट में पहुंच गए हैं और कई हाई कोर्ट ने अच्छे काम किए हैं। मैं राजस्थान हाई कोर्ट का सराहना करना चाहता हूं। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया है, जिससे लोगों को न्याय दिलाने में बहुत काम आया। हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस हैं, हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सारे अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कुछ हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यू है। मुझे पिछली बार बताया गया कि उदयपुर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कंजस्टेड हो गए हैं। ये सारा इश्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने पिछली बार भी वादा किया हुआ है कि राजस्थान से जो भी आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह नीचे में टॉयलेट बनाना, बाथरूम बनना, लेडी लॉयर के लिए अलग से व्यवस्था होना, स्मार्ट रूम, ये सारा जो भी व्यवस्था मदद करना है, हम पूरा मदद करेंगे। आप यहाँ से जो भी प्रपोजल भेजेंगे, राज्य सरकार के साथ तालमेल करके हम पूरा मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि जुडिशरी के जब हम बात करते हैं तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ जो विक्टिम्स होते हैं, जो प्लेंटिफ होते हैं, जो लोग पब्लिक होते हैं, उनके लिए भी तो साधन होना चाहिए, उनके लिए भी सुविधा होना चाहिए। तो चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम कई कदम उठा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आने वाला दिनों में जो पेंडेंसी है, मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था कि लगभग 4 करोड़ 90 लाख तो क्रॉस हो चुके हैं, हम लगभग 5 करोड़ की ओर जा रहे हैं। ये जो पेंडेंसी है, मेरे लिए तो ये हर समय हर पल मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में इतना ज्यादा केसेस पेंडिंग होना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए भी शोभा नहीं देते हैं। कई कारण है पेंडिंग का, एक कारण नहीं है। और आज मैं उस कारण का चर्चा करना भी नहीं चाहता हूं, और उसका सॉल्यूशन भी कई रास्ते हैं। तो वो सॉल्यूशन, ये सब जितना भी चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे, उसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो टेक्नोलॉजी है, जो मैंने ब्रीफली जिक्र किया। इसके अलावा हम काफी चीज मंत्रालय के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ई कमेटी के, सुप्रीम कोर्ट के जो ई कमेटी है, उनके साथ तालमेल करके हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट से हम तालमेल करके कई कदम उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मैं मानता हूं कि पेंडेंसी ठीक है, अगर हम पेंडेंसी को आज के दिन में संख्या का दृष्टि से कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिस्पोजल रेट है, न्याय देने का जो प्रक्रिया है, उसको और हम तेजी करना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो सब जानते ही हैं, हमारा इंडियन जजेस का हालत बहुत खराब है आज के दिन में। एक एक जजेस जितना केसेस हैंडल करता है, मैं तो समझता हूं कि ये बाकी लोगों के लिए तो असंभव है। अब मैं मेरा कोई मंत्री कलीग बाहर देश के जस्टिस मंत्री कभी चर्चा करते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे भारत में एक जज एक दिन में 50-60 केसेस हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो वो विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये भी तो इंसान है, भारत के लोग भी इंसान है, तो एक जज 50-60 केसेस कैसे हैंडल करते हैं। मैं बोलता हूं कि कोई मन पसंद हो कि थोड़ी ना हैंडल करते हैं। इतना केसेस पेंडिंग है, मजबूरी में देखना पड़ता है।
तो ये तो बड़ा चिंता का विषय तो है ही, और इतना केसेस डिस्पोज भी करते हैं, न्याय देते हैं, लेकिन उससे दोगुना केसेस हर दिन नया नया केस आते रहते हैं। तो ये भी देखना होगा। ये आज जुडिशरी के बारे में मैं जो ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना केसेस लेना है, कितना केसेस हम इनटेक कैपेसिटी है, और कितना नए केस लेने हैं, कितना पुराना केसेस, पेंडिंग केसेस को ठीक करना, क्यों केसेस डिले होते हैं, अथॉरिटीज का, इन्वेस्टिगेशन टीम का कई इशू होता है। लेकिन आम आदमी सीधा सवाल करते हैं, मुझे भी सवाल करते हैं, आप न्याय मंत्री हैं, इतना केसेस पेंडिंग है, न्याय जल्दी दिलाने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्यों इतना केसेस पेंडिंग है? और जजेस को भी सवाल करते हैं। बेचारे जजेस तो हमारे जैसे ओपनली कह भी नहीं सकते हैं। जजेस लोग तो कहने के लिए भी बहुत सोच समझ करके बात करना पड़ता है। हमारे जैसे, हम तो पॉलिटिशियन है, तो कभी कभी हम जो सोचता है हम बेटुक कह देते हैं। जजेस लोग तो इतना कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये लोगों को पता नहीं कि जजेस इतना ज्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी पेंडेंसी बढ़ता है। उसमें जजेस का गलती नहीं है, गलती सिस्टम और जो हमारा यहाँ प्रथा जो बनाया हुआ कि इतना केसेस और आ रहे हैं। कई कारण है, मैं उसको ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक डायनामिक लीगल सिस्टम हमारा देश में जैसा होना चाहिए, वो हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। कई पुराने कानून है जो कोई जरूरत नहीं है, हम पूरा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है 1486 पुराने कानून हम ऑलरेडी हटा दिए गए हैं 2014 से 2023 के बीच में। और अभी जो बजट सेशन चल रहे हैं, अभी तो ब्रेक चल रहा है, उसमें 67 न्यू जो हमने प्रपोजल डाला है, उसमें से पुराने कानूनों को हटाने का हमने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। क्योंकि ऐसे कानून जो जरूरी नहीं है, क्यों हमारे स्टैट्यूट बुक में रहना चाहिए? ऐसा कानून हो जो हमारे काम में आए। कोई ऐसा कानून का प्रावधान है, कोई काम नहीं है, वो हमारे आम लोगों को परेशानी देने के लिए कानून बनाया गया था उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। कई कानूनी प्रावधान ऐसा है जो बिना मतलब लोगों को परेशानी देती है, कोई जरूरत नहीं ऐसे कानून का। हम लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसे पुराने बेकार का कानून को सब हटाने का हमने अभियान शुरू कर दिया है। मोदी जी ने क्लियरली कहा है, जो कानून देश के आम जनता के लिए बोझ है, ऐसा कानून हमारा स्टैट्यूट बुक्स में रहना नहीं चाहिए। और बिना मतलब हमारे जुडिशरी लॉयर्स को हम परेशानी देते हैं, इतना कानून बना देते हैं। कानून उतना ही बनाना है जितना जरूरत हो। वो डायनामिक है, जैसे जरूरत चीज है, हम कानून बनाते हैं, बदलते हैं। तो हमारा सरकार का पूरा फोकस क्लियर कट है कि हम पीपुल सेंट्रिक है, कॉमन पीपुल सेंट्रिक है, गरीबों के लिए हम समर्पित है। और कोई ऐसा कानून प्रावधान नहीं होना चाहिए जो गरीबों के लिए, आम आदमी को परेशानी दे। इसी दृष्टि से इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए हमारे पास कई कानून है, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कई कानून हमारे पास है। कानून भी है और सरकार का पॉलिसी भी है, और कई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का अच्छे जजमेंट रूलिंग्स भी हमारे हाथों में है। ये सारा चीजों को देखते हुए अगर हम एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम बिहेव करें, तो भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ में हम आज सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला बड़ा अर्थव्यवस्था बन के बैठा हुआ है। तो हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी अचीव करेंगे, और हम अपना इन्वायरमेंट को भी बचा के रखेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी हम प्राप्त करेंगे। हम अमीर भी हो सकते हैं, और हम इन्वायरमेंट के दृष्टि से भी बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री भी बनना चाहिए। तो दोनों को जो तालमेल करता है, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ए डेवलपमेंट व्हिच हैज टू बी सस्टेनेबल। Unsustainable development has no meaning. That will lead to digging our own graveyard. वो तो हम तो सुसाइड काम तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो टारगेट लेकर के आज यहाँ हमने सेमिनार में आने का काम किया है, हमने बहुत ज्यादा
सोच के नहीं आया है। मैं इसीलिए ज्यादा भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो आप टेक्निकल सेशन में कई चीजें बारीकी से आप चर्चा करेंगे, और हम तो जस्ट आपको एक एनकरेजमेंट, सपोर्ट और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, साथ देने के लिए आए हैं। जो असली मूल भाव जो इस सेमिनार का है, वो जो टेक्निकल सेशन होते हैं वहीं से उभर के आएंगे। अंत में मैं अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आप मेहनत कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल है। इंडिया इज द फ्यूचर। इंडिया को दुनिया अब लीडरशिप मान्यता दे चुके हैं। दिस इज आवर मोमेंट, दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, और हम अपना लीडरशिप को सही तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व को लीड करने का कैपेसिटी रखते हैं, और आज हम लीडरशिप का रोल दे रहे हैं। इसी दृष्टि से आपका भविष्य के लिए, चाहे आप एज ए लॉ स्टूडेंट आप लीगल प्रोफेशन में रहे, या एज ए लॉ ग्रेजुएट कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन लीगल एजुकेशन इज ऑलवेज हेल्पफुल। और लॉ के बारे में जानकारी बहुत अच्छी बात है। अभी हमारा राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब बता रहे हैं, जेल के बारे में बोल रहे थे, कैदियों के बारे में भी बात कर रहे थे। आप लोग को नहीं मालूम, वो पुलिस ऑफिसर थे पॉलिटिक्स में आने से पहले, इसलिए उसका ये सब बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो ये सारे जो लॉ का ज्ञान जिसका पास होता है, वो थोड़ा अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उसका पास लॉ का डिग्री है। लोग भी डरते हैं ना, वकील बोलने से लोग डरते हैं। तो आप LLB डिग्री पाने के बाद आप प्रैक्टिस ना करें वो आपका इच्छा का अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन आपका डिग्री आपके लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, और आपके फ्यूचर के लिए रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर लीगल प्रोफेशन के अलावा कई चीजें कर सकते हैं हम। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के दुनिया में भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आर्बिट्रेशन के दुनिया में, मीडिएशन के दुनिया में भारत एक रास्ता खोल रहे हैं। और अभी पिछले सप्ताह हमने दिल्ली हाई कोर्ट के ये लीडरशिप में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो हुआ था, मैंने भी हिस्सा लिया उसमें। आर्बिट्रेशन को लेकर के कई लोग आए, दुनिया के बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों से प्रतिनिधि आए, और सबने माना कि ADR के क्षेत्र में भी भारत एक लीडरशिप के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके सामने में। एज इंडिया ग्रोज एज इकोनॉमिक पावर, opportunities are bound to come in front of you. You just have to grab the opportunities. आप तैयार रखिए, मेहनत कीजिए, आपके लिए भविष्य में कोई टेंशन लेने का नहीं है, बस सिर्फ मेहनत करना है। विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट डिसिप्लिन लाइफ में कुछ नहीं हो सकते। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और मैं आपको कहता हूं और कहना चाहता हूं, आप इंटेलिजेंट होगा, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है। आदमी का जिंदगी में देश के लिए कुछ करने के लिए, जो भी आप काम करें, देश के लिए कुछ करना चाहिए। मैं जब छोटा था, हम तो जब चीन का आक्रमण हुआ तो मेरा तो जन्म नहीं हुआ उस समय, लेकिन वही कहानी सुन सुन के हम बड़ा हुआ कि चाइना अटैक किया था, ये किया था, वो किया था, हमारे कुछ लोग खेती चले गए, हमारा काफी इंडियन आर्मी का सेक्रीफाइस हुआ, काफी नुकसान हुआ, ये सब हम लोग सुनते सुनते आए। लेकिन साथ साथ मन में एक जज्बा पैदा होते गए कि हम बड़ा होकर के देश के लिए कुछ करेंगे, हम चीन को सबक सिखाना चाहते हैं। तो वो गुस्सा, वो ऐसा हमारे मन में थे, तो उसी से हमारे अंदर में जो राष्ट्रीयता का भाव है, सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, वो बहुत उभर के आए हैं। और इसलिए आप जानते हैं अरुणाचल में लोग जय हिंद नारा लगाते हैं, और फौजी में, SSB में, BSF में, ITBP, SSB या जो भी यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम जिस माहौल में पैदा हुए, उससे काफी चीज हमको बल मिलता है कि कुछ करना है, लेकिन देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए जो भी आप काम करें, जिस प्रोफेशन में भी रहे, ये याद रखें कि
देश के लिए कुछ काम आना चाहिए। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ लेकिन आज नहीं कहूँगा क्योंकि आज काफी स्टूडेंट्स है, तो और मैं बाकी सीरियस इश्यूज पे मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर हम कहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बन के ही रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा 2047 तक इंडिया विल बिकम फुल्ली डेवलप्ड कंट्री, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो आप लोगों के ऊपर में कॉन्फिडेंस है। अगर हमारे युवाओं के ऊपर में, हमारा देश के युवा पीढ़ी के ऊपर भरोसा नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा सपना नहीं देखते। वो इतना बड़ा लक्ष्य इसलिए रखा है कि हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जो यंग जनरेशन के बलबूते। आपके ताकत, आपका डेडिकेशन और आपका योगदान से हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। एंड मैं तो देख रहा हूं कि विवेकानंद ने, जब आप लोग को मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कही थी कि 21वीं सदी भारत का सदी होगा, 21st century will be India's century, और ये हम पूरा होते हुए अपने आंखों के सामने में देख रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। वी आर द लकीस्ट जनरेशन। हमारा पहले जनरेशन गुलामी के वो जंजीरों में सब अपना जिंदगी चले गए। 200 years उससे पहले अलग अलग शासक आए। हम लोग तो फ्रीडम के समय पैदा भी हुए इंडिपेंडेंट इंडिया में, और इंडिया डेवलप होते भी देख रहे हैं। मैं तो शायद उतना तो बूढ़ा नहीं हुआ, 2047 तक तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं पूरा जिंदा रहूंगा और देख पाऊंगा कि इंडिया फुल्ली डेवलप्ड होगा। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं, और आप लोग जो यंगर जनरेशन है, आप तो हमसे भी ज्यादा खुशकिस्मत वाले हैं। तो आपके समय में इंडिया विल बी फुल्ली डेवलप्ड एंड ए ग्लोबल सुपर पावर। ये पूरा हमको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. It was a distinct honor to hear you and take inspiration from your words. We really feel privileged to have your supervision and backing with us at all times possible. Many, many thanks to all the guests on the dais for their illuminating words. Ladies and gentlemen, now with the permission of the chief guest, Honorable Minister for Law and Justice, I declare this conference open for further proceedings. The conference agenda covers a variety of range of subjects on which are essential to the goal that we are working towards. We anticipate having a fruitful discussion. Let me once again express a sincere welcome to all the dignitaries and the experts. सभागार में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जावें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। With this, the inaugural session has come to an end. कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग हेतु सभी उपस्थित अतिथियों एवं विद्यार्थियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। सभी महानुभावों से निवेदन है कि वे अतिथियों के प्रस्थान तक अपने स्थान पर खड़े रहें तथा सदन की गरिमा बनाए रखें।
Before we commence the proceedings of the conference, I invite the esteemed dignitaries and guests for lunch at Guest House. And faculty members, staff, and students, kindly take your lunch at Law College. The next working session, that is the first thematic session, will commence at 1:30 p.m. at FMS Auditorium. The students must reach the auditorium by 1:15. Puneh dhanyavad evam abhar. Jai Hind, Jai Bharat.